First of all, I want to thank everybody that is here today. It is an amazing evening. We have over 700 people attending this great fundraising dinner organized by SURF Canada on behalf of Shaukat Khanum Cancer Hospital. As you know, Shaukat Khanum Cancer Hospital has 2 locations right now, one in Peshawar and one in Lahore, and they are in the process of building one in Karachi now. They have the land, and inshallah we'll be doing it. So I want to thank you, those who have come here. They have come here for a purpose, and I am sure that they're going to be donating very generously to help us support, build the new hospital. Thank you. Jazakallah. With the whole crew and making all this happen, so Tarisa, why don't you say a few words? Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital is a charity hospital which is providing free of cost cancer treatment to 75% of the patients who come to us. To give back to the community, give back to the hospital, and do the best we can in terms of supporting and helping each other. सनम मारवी जो एक सूफी सिंगर हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाली हैं। अस्पताल में जो भी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं लोगों को बग़ैर फ़ीस के, उसमें और ज़्यादा इजाफा हो। One of the initiative of Humanity First is to support hospitals. We're all here to help the cancer hospital in Lahore. बड़ी खुशी की बात है कि अभी ये दूसरा हॉस्पिटल पेशावर में उन्होंने शुरू किया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह तीसरा हॉस्पिटल जो है वो कराची में भी शुरू करेंगे, जिसके लिए बहुत जल्दी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली, ज़मीन मिल चुकी है। उन लोगों को वाकई सैल्यूट टू देम, दे आर वेरी नाइस। माशाल्लाह खालिद उस्मान साहब ने अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ग्रेट कॉज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम। We are very glad to receive you and to see you. And inshallah keep donating and make it a memorable evening for everybody here in Toronto. 1 साल से वो यहाँ पर फंड रेजिंग उसके लिए कर रहे थे। शौकत खानम हॉस्पिटल क्योंकि लाहौर में है और हमने उसकी खिदमत काफ़ी अरसे से वो लोग मरीज़ों की बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। Dear friends, we are here for the fundraising of the cancer hospital. That what this hospital and organization have done is unique, and there is no example of such a wonderful cancer care hospital in the world, which is a charity-based hospital. Shaukat Khanum Hospital in Pakistan has done immense work for the people of Pakistan and for those that are the neediest in the community. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम मारवी और आज यहाँ पर टोरंटो में हम सब इकट्ठे हुए हैं। वाहिद इदारा है जो बग़ैर किसी प्रॉफिट के और किसी और लालच के ये इंसानियत की खिदमत कर रहा है। मेरे महबूब नवाज़ मोहब्बत मेरे महबूब नवाज़। थैंक यू। जो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग किया है उसमें शिरकत के लिए आया हूँ और बहुत अच्छी रौनक है माशाल्लाह। And if we can do something for cancer, I think it's wonderful, and I got to congratulate Khalid Usman for always being so excellent in organizing events like these. I'm very pleased to be here tonight along with Chief Jolliffe representing York Regional Police. We are always very proud to get out into the community and support the great efforts that Mr. Usman does. मेरी ये खुशनसीबी है कि आज मैं यहाँ फंड रेजिंग के सेशन में और जो प्रोग्राम हो रहा है जो खालिद उस्मान साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं इसमें मदऊ हूँ और आज यहाँ सनम मारवी गज़ल पेश करेंगी। ये पिक्चर भी लेता हूँ। आई कैन टेक पिक्चर ऑल्सो। पिक्चर वाले आ गए सफीर भाई। Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests,
and our faithful supporters of many wonderful causes. My name is Anisa Hayat, and I am here with my sister Rabia. And yes, we are both daughters of Khalid and Dr. Abda Osman. We will serve as this evening's masters of ceremonies. We ask only 3 things of you this evening. One is that you please not talk while there is someone at the stage microphone trying to address you as we are right now for the Shaukat Khanum Cancer Hospital, and to then be rewarded by fabulous entertainment by the very talented Sanam Marvi. Speeches. Our first video message is from Markham's beloved mayor, Mayor Frank. Hello, I'm Mayor Frank Scarpitti, and on behalf of the City of Markham, I want to extend a warm and sincere welcome to everyone attending the fundraising gala in support of the Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center in Lahore, Pakistan. Almost all of our families have been touched by cancer, and no matter who you are or where you live, when you're diagnosed with cancer, you deserve access to the very best cancer care. Last year, your zakat and donations raised from around the world made it possible to treat almost 75% of cancer patients at Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center for free. That success is a perfect example of the kind of generosity and charity that Muslim communities have embraced in Ontario and around the world. मैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी को खुश आमदेद कहता हूँ आज इस फंड रेजिंग इवेंट में, और ये इवेंट पहला इवेंट है जो कैंसर एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हो रहा है, जो एक नई हमने फाउंडेशन सेटअप की है कि जो शौकत खानम को सपोर्ट करेगी कनाडा के अंदर। तो मैं आप सबको खुश आमदेद भी कहता हूँ, और मैं जो लोगों ने इतनी मेहनत से ये आज की शाम ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि शौकत खानम में तकरीबन 75% मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता है। ये जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ पिछले 26 सालों में कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है कि जिधर इतनी ज़्यादा तादाद में गरीब मरीज़ों का इलाज होता है और मुफ्त, मुकम्मल तौर पे मुफ्त, यानी कि जब से वो एंटर करते हैं हॉस्पिटल में, खाना पीना रहना सारा हॉस्पिटल में हम उनका मुफ्त इलाज करते हैं। और ये कोई दुनिया की मिसाल नहीं है कि प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल इतने ज़्यादा मरीज़ों का मुफ्त इलाज करे। हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लोग, बैरून मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमें ज़कात भेजते हैं और डोनेशंस भेजते हैं। ज़कात तो सिर्फ इस्तेमाल होती है गरीब मरीज़ों के इलाज पे, और डोनेशन से हम फिर इक्विपमेंट लेते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एक्सटेंशंस करते हैं। तो अब तक मुझे बड़ी खुशी से मैं ये आपको कहूँ कि हमारा जो पेशावर का हॉस्पिटल है वो शुरू हो गया। वो हमारी सॉफ्ट ओपनिंग थी 29 दिसंबर को, और अब इंशाल्लाह हम इसको आगे मज़ीद अब इसकी सेकंड फेजेस, थर्ड फेजेस में जा रहे हैं। हम रेडियोथेरेपी शुरू हो रही है वहाँ, और पेशेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे जो कीमोथेरेपी बेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक्सपैंड कर रहे हैं। उसके अलावा 29 दिसंबर को इंशाल्लाह कराची के शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग है, और ये भी मेरे लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है क्योंकि ये भी एक बड़ी स्ट्रगल थी कि हम कराची में हमें जगह एक ऐसी मिलती जिधर हम हॉस्पिटल बना सकते। बदकिस्मती से जो जगह मिली वो इतनी दूर थी शहर के बाहर, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था हॉस्पिटल बनाने का। तो ये जो हमें अब DHA में जगह मिली है ज़बरदस्त है, और हमने अब पूरी हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बन रही हैं अमेरिका से। हमारे पास वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने शौकत खानम लाहौर बनाया, जो शौकत खानम पेशावर बनाया, और वही अब कराची की शौकत खानम कराची की सारी ड्राइंग्स बना रहे हैं। और ये याद रखेंगे जो हमने गलतियों से सीखा, जो शौकत खानम कराची है, जो पेशावर है, वो सारी गलतियों से सीख के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, और इंशाल्लाह वो जो कराची में बना रहे हैं वो भी सारी
जितनी भी हमारी जो एक्सपीरियंस है अब उस एक्सपीरियंस से सीख के बना रहे हैं। जो मुझे और भी बड़ी खुशी से आपको न्यूज़ देनी है वो ये कि 9 स्टोरीज़ की अब सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है लाहौर के अंदर। 9 स्टोरीज़ का एक सेपरेट ब्लॉक बन रहा है और ये हमारा जो शौकत खानम हॉस्पिटल उससे भी बड़ा ये प्रोजेक्ट यानी अकोमोडेशन। आप ये समझें कि एक शौकत खानम लाहौर में और उसी के साथ साथ उससे बड़ा एक हॉस्पिटल बन रहा है। भेजते हैं, अगर ये ना हो तो हम ये कुछ भी ना कर सकें। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ जिस तरह आपने हमेशा मदद की है कि आप इस हमारे शौकत खानम को पूरी सपोर्ट करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। I will start with the mission statement. In fact, there are 4 pivotal points of our mission. One is that our mission was to act as a model institution to treat the cancer patients irrespective of their ability to pay. And the third one is the education and research, which we are continuously, perpetually doing for last 22 years. Shaukat Khanam is the story of a success of the collective will of people of Pakistan, and this institution represents and is the manifestation of the goods of our society. And there is no other example in the world that a cancer hospital in the private sector is treating 75% of the patients who come to us free of cost. It is a great cause. It is a state-of-the-art medical center, comparable by any Western standards, one of the best cancer treatment hospital and research center in the world. You have a right to know where your dollars go, how your contributions are applied, and that was the reason for the presentation. So you could see the various projects, how the funds are utilized, where the money is going, how much is expected, and what the budget of the hospital is. So where you've seen all the statistics, I want to share with you that there is a human face to the hospital. It is a hospital that treats poor cancer patients, indigent, sick, members of society in a country like Pakistan who do not even have access to buy a couple of aspirins, let alone a cumbersome and expensive treatment like cancer. And cancer is a disease that I don't have to say this, but we all know. There is hardly anyone who has not been affected in some way or the other through a family member or through a friend by this deadly disease. It takes away life. So when you contribute to Shaukat Khanam Cancer Hospital, you're actually not only giving hope for a life, but you are giving a life to someone. And it is about treating the poor who have nowhere to go. They are treated in a beautiful manner, with a lot of compassion, great treatment that is given to them at the hospital. So please, while you're all here tonight, and there is a great entertainment program planned for you, we have flown in a renowned artist, Sanam Marvi, all the way from Pakistan for your entertainment. Please be generous. Please consider this yet another opportunity for good people like you to contribute to a very worthy cause. Every dollar that you donate to the hospital goes a long way in giving hope and life to some unfortunate and sick cancer patient in Pakistan. So please be generous tonight, do contribute, and before I leave, I want to tell you that one of the very popular programs at the hospital is where you can make a contribution of $5,000 US. I don't know how that converts to Canadian dollars, but $5,000 US is the sponsorship for 1,000 square feet of constructed space at any one of the hospitals. And all the hospitals have a wall of dedication in the hospital. And that $5,000 can be donated in the memory of a loved one or maybe someone who is not alive. Their name will be inscribed on the wall of dedication. It will stay there permanently,
It is a great form of Sadqa-e-Jariya. Please, I encourage you and I urge you to contribute. Do contribute. There are various methods by which you can help cancer patients. And just for your information, where we all know that cancer is very expensive treatment, $6,500 will treat a lymphoma patient. $8,500 will treat a woman who has breast cancer, and so on and so forth. The list is endless. The need is enormous. And of course, capacity is limited. And that is why year in and year out, we come to good people like you who have a heart. And Khalid Bhai, I can see by mashallah the diversity of your attendance and the various people who are here. They're wonderful people. This is the beautiful thing about humanity. It's all about helping those who are in need. It does not matter what the color of their skin is, what language they speak, where are they coming from. If you see the need, you want to help. And that is why we have hope with the human race. God bless you all. Have a wonderful evening. And please remember, you're here for a purpose. You're here to help the cancer hospital. And I'm sure that all of you wonderful people in Toronto will do what you're here to do. Bless you. Introduction. Your tireless favorite fundraiser and our beloved father, Khalid Usman. Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. That was the shortest introduction I've ever had. My God, Rabia and Anisa, I thought at least from you I'm going to get a resounding sort of introduction. But my dear friends, before I actually start, our favorite Minister of Immigration, John McCallum, who's here, I'm going to request him to please come up, because I know in his original speech, he was not forthcoming to talk about what, as immigration minister, the policies that affect most of the immigrants, what are they under the present government they're doing. So I'm going to ask him to take a few minutes and highlight all the changes that he's trying to do. Well, thank you, Khalid. I'm glad to be back. Before I was a little bit too shy to talk about immigration, but Khalid's convinced me to do that for just a few minutes. And I'll begin by saying what I said earlier today in the House of Commons. When it comes to immigration, our Liberal government inherited a big, fat, conservative mess which we have had to clean up. And you want me to tell you some of the things we've cleaned up? First of all, there is in Syria one of the worst refugee crises the world has seen in decades. And so we, in a few short months, have taken more than 30,000 Syrian refugees across the ocean to welcome them here in Canada. And many of you have helped them out. The Conservatives deprived many refugees of health care, and we have reinstated refugee health care. Under the previous government, there were two classes of Canadians, and we are reinstating the principle that a Canadian is a Canadian is a Canadian. And that bill has now passed the House of Commons, and I'm hoping it will be through the Senate very soon, and hopefully before Christmas. I believe that if you look around the world, the most promising future Canadians are international students. They're young, they're educated, they speak English or French, and we need them in this country. So just earlier this week, we made changes which will make it a lot easier for international students to become permanent residents. So we expect 40% of our economic immigrants will be international students.
The Conservatives reduced the age of dependence for family class from 22 to 19. We're putting it back to 22. And one of the most important campaign promises we made is that today it takes 2 years, or sometimes even more, for families to be reunited. We have been working on that, and I can promise you within 2 weeks, we will be announcing a new system where it will take radically less time for families to be reunited. We just announced a new system to make it much easier to bring global talent into Canada and thereby create jobs and growth in this country. I could go on, but Khaled's waiting to talk. I just wanted to give you some sense that we are acting to clean up what we inherited. We still have a long way to go, but we're making progress, and we are definitely making Canada a more welcoming place for immigrants because we need them, we welcome them, and we are becoming a much more welcoming country. Thank you all very much. And now what we've all been waiting for. I'd like to give a little background of our guest this evening, Ms. Sanam Marvi. As I was asking her about a little bit of her background, I was astonished to know all her accomplishments. She is a Sufi singer from Sindh. She studied under the Gwalior Gharana. She was the only student of Abda Parveen. She is a recipient of the United Nations Award for promoting peace through music. She's appeared in 7 seasons of Coke Studio. She can sing in many different languages, including Sindhi, Urdu, Punjabi, Saraiki, Persian, and Arabic. She has performed in countless countries, including Japan, France, Australia, Morocco, etc. There was a documentary produced on her life and premiered here in Toronto. The documentary won the Making a Difference Award for a story that aspires to spark change through film. So everyone, this is the time you guys have all been waiting for. Please welcome Sanam Marvi. सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ सब आए, आपकी बहुत मेहरबानी और आपने चैरिटी किया और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि एक वाहिद जी कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें कोई बग़ैर किसी प्रॉफिट के इंसानियत की खिदमत की जाती है। सो आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप सब ने बहुत तावन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई मुझे। मैं अब जो कलाम आपको सुना रही हूँ वो बहुत बड़ा कलाम है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कलाम है और मन कुन्तु मौला फ़हाज़ अली मौला, बहुत बड़ा कलाम है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको गौर से सुने और इसका बेसिकली मैसेज क्या है, आप उस मैसेज को गौर से सुने।
तशना कर ज़ौक़े बेखुदी ये सुजूद, नजर की चंद शुआओं में घिर गया हूँ मैं। वक्त फीले दामने मुर्तज़ा, मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिला। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। अली वो इसमें आज़म है कि जिसने पुकारा उसी के काम आया। ना रब अर्श मुअल्ला उते, ना रब खाने काबे हूँ, ना रब इल्म किताबे लभिया, ना रब विच महराबे हूँ। गंगा तीरथ मूर ना मिलया, पांडे बेहिसाबे हूँ। जगदा मुर्शद मिलया बाहू, छुट्टे सब अज़ाबे हूँ। बहती फिरे शराब में कश्ती फकीर की। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, सूफी जज्बात में बहने वाले, कुत्ता बन गए दर्दो गम सहने वाले, कुत्ता बन गए दर्दो गम सहने वाले। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कुत्ता बन गए दर्दो गम सहने वाले, कुत्ता बन गए दर्दो गम सहने वाले, और वली बन गए, वली बन गए, वली बन गए, वली बन गए। या अली कहने वाले अली मौला मौला 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 अली मौला।
पल विच जा बख्शाया अली मौला मौला 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 अली मौला अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली 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 हजार जान गिरानी फिदाएगा अली मौला मौला 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 अली मौला नाम सुन्नी नाम शिया नाम 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 सुन्नी नाम शिया मेरा दो हाथा दिल सड़िया मुक गई सब खुशी पैंडे दरिया रहमत बड़िया ये मन तारू तर तर हारे कोई किनारे चढ़िया सही सलामत पार गयो बाबू जिन्ना मुर्शिद दा लड़ फड़िया अली मौला मौला 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 अली मौला बने सूफी जज्बात में बहने वाले बने सूफी जज्बात में बहने वाले खुदा बन गए दर्दो गम सहने वाले खुदा बन गए दर्दो गम सहने वाले वली बन गए या अली कहने वाले अली मौला मौला 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 अली मौला या रब फिर एक बार हम फकीरों पे मरहम
माधुलाल हुसैन है, अपने लिए कहते हैं कि नमाज, रोज़े, हज और बहुत इबादतें करके अपने आप को सूफी और वली मत कहो। कि कैसे कह रहे हैं कि